So, hello students. So, today we will learn about the chapter 1 of part 2, 12th chemistry, which is about haloalkanes and haloadenes. Now, in this chapter, we have an exciting mechanism regarding the reactions of haloadenes and haloalkanes. So, primarily, we will focus ourselves with the reactions of haloalkanes. Now, what type of reaction are we speaking about? Well, we are speaking about a special class of reaction known as nucleophilic substitution reactions. So, what are these type of reactions? So, let's take an example. Let's say we have a general alkyl halide, let's say Rx. X not being fluoride, X को हम X के जगह पे हम सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ही लेंगे। यहाँ पे हमने एक एक्वास बेस दिया है, एक्वास KOH हो सकता है, एक्वास NaOH हो सकता है। रिएक्शन के बाद हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है एक एल्कोहल ROH। नाउ माइंड इट, यहाँ पे एक बात के बारे में हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, वो ये है कि यहाँ पे ये जो एक्वास वर्ड है ना, इसका हमें ध्यान रखना है। अगर गलती से भी इवन बाय मिस्टेक इफ समवन राइट्स अल्कोहलिक KOH, if ALC word is present there instead of AQ, then the whole reaction will be changed. अगर हम यहाँ पे अल्कोहलिक यूज करते हैं तो इन दैट केस हमें अल्कोहल नहीं मिलेगा, इन दैट केस हमें मिलेगा एल्कीन, और ना ही वो रिएक्शन फिर इस कैटेगरी में आएगा। तो we should never use the word alcoholic. So this is the overall general expression of nucleophilic substitution reactions. Now, why are we speaking or why are we calling this as nucleophilic substitution reaction? So let's take a deeper look at that aspect. So, our general expression is like this. Now, our substrate here is an alkyl halide. Reagent is aqueous KOH and product is an alcohol. Now, in this reaction scheme, if we take a closer look, we will see that this X, meaning the halide, is actually getting replaced by the OH group in the product. Now, where did this OH come from? Well, as we are using aqueous KOH, so obviously we can think of the potassium hydroxide being dissociated in presence of water to produce hydroxyl ions. So that means this alkyl halide is actually getting attacked by an hydroxyl ion. Now, हाइड्रोक्सिल आयन के पास क्या है? इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये तो एक चार्ज स्पीशीज बन गया। तो अगर ये एक चार्ज स्पीशीज है तो ऑब्वियसली ये एक स्टेबल स्पीशीज नहीं होगा। जैसे कि कोई भी चार्ज स्पीशीज स्टेबल नहीं होते हैं, वो कोशिश क्या करते हैं कि उनका जो चार्ज है उनको हटाने के लिए, सो दे एक्चुअली ट्राई टू न्यूट्रलाइज देयर चार्ज बाय सम वे और अनदर। Now, as the OH minus has already been produced due to the dissociation of KOH, so obviously it's not going to go back with the K plus. So what it actually is going to do is, it's going to attack the halogen atom carrying carbon of the alkyl group.
Now why is it going to attack the halogen carrying carbon atom? So if we take a deeper look in the bond or for the nature of the CX bond, now let's say X is, let's say, chlorine. So let's replace this X with chlorine. Now chlorine is more electronegative than carbon. तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन का ज्यादा है. तो जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर है वो फिर किसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा? ऑब्वियसली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ. तो इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन है. तो फिर जो ये कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड पेयर है ये फिर शिफ्टेड रहेगा टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम, which will in turn result a partial negative charge on the chlorine atom and a partial positive charge on the carbon atom. Now, what did we see earlier? This hydroxyl ion is actually attacking the halogen carrying carbon atom. Now we know the reason. So, as this halogen carrying carbon atom is partially positively charged, so that means it is partially electron deficient. इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, थोड़ा सा भी क्यों ना हो लेकिन है. और क्योंकि OH के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देने की कोशिश करेगा. अब यहां पे फिर OH माइनस क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको अटैक कर रहा है. मतलब क्या, हम घुमा के अगर बोले तो इसको बोल सकते हैं कि OH माइनस जो है वो एक न्यूक्लियस को अटैक करने की कोशिश कर रहा है. तो मतलब कि OH माइनस क्या बन गया यहाँ पे? एक न्यूक्लियोफाइल. और इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से जो पहले था मेरा एक हैलोजन वो अभी क्या बन गया? अभी हैलोजन है यहाँ पे? ऑब्वियसली नहीं है. यहाँ पे अभी क्या है? एक OH ग्रुप. मीनिंग द हैलोजन एटम of the original substrate is actually getting replaced or substituted by the attacking nucleophile, which is OH in this case. Hence the name substitution and nucleophilic substitution reactions. So this is the general expression of the overall reactions. Now we need to take a deeper look into the mechanism of this type of reactions. So for the sake of simplicity, let's restrict ourselves or let's restrict our discussion with the nucleophile of OH minus. The general trend or the general result we will discuss later. After we discuss the overall mechanism, then we will come back to the different cases of different nucleophiles. So let's say we have a alkyl halide. Let's take the example of, let's say, bromomethane. And we have used aqueous KOH in bromomethane. So we know that product is obviously going to be methanol. But this time we are more focused of the mechanism of this reaction, meaning how this reaction is actually taking place. Now obviously we told earlier that OH minus is going to attack, but how is it going to attack? Since or in which direction or in which way is the OH minus going to approach this halogen carrying carbon atom? So those things we need to discuss. So let's discuss those things now. So for the discussion, let's draw this bromomethane molecule in a little bit different manner. So let's say this is our carbon and this is our bromine. This is another hydrogen atom. This is another hydrogen atom. So as you can see here, carbon is having 4 single bonds, meaning 4 sigma bonds. So carbon is having sp3 hybridization. So that means
our little carbon friend here is having sp3 hybridization, and hence it will have a tetrahedral geometry. So for the tetrahedral, for representing the tetrahedral geometry, I have taken two bonds of carbon, say carbon bonding with hydrogen and carbon bonding with bromine on the plane of this whiteboard. This hydrogen here, as it has a solid edge, so that represents that this carbon, which is also on the plane of this whiteboard, is bonded with this hydrogen, but this hydrogen is actually above the plane of the whiteboard, means like this. So if you can actually see, so this hydrogen, you can imagine it to be the top of this marker, means this blue colored. And similarly, I have used this dashed wedge to represent another remaining hydrogen, which is actually behind the plane of the whiteboard. So this is actually the 3D geometry of the molecule bromomethane. Now, let's think. Carbon's valence shell is having the configuration of carbon's valence shell is what? 2s2, 2p4. Sorry, my mistake here. So carbon's total overall electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. So if I remove this 1s2, that leaves me with the valence shell configuration, which is 2s2, 2p2. For hydrogen, I have 1s1 only. We have bromine here. So for bromine, we have the valence shell configuration of 4s2, 4p5. Now let's make a comparison. For carbon, the valence shell is having 2s2 and 2p2 configuration, and for bromine we have 4s2, 4p5 configuration. अभी अगर सिंपल ठंडे दिमाग से अगर सोचते हैं, तो जो रेडियस है, जो साइज है, वो 2s 2p का बड़ा होगा कि 4s 4p का बड़ा होगा? Obviously 4s 4p is the winner here. 4s 4p का जो साइज होगा वो ऑब्वियसली 2s 2p से बहुत बहुत ज्यादा होगा. मतलब कि जो ब्रोमीन एटम है इधर, इसका जो साइज है वो कार्बन से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है. मतलब कि अगर मैं ब्रोमीन का एक जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा ही काइंड ऑफ ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा होगा. तो अभी जो हमारा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल था, वो क्या फिर इस ब्रोमीन के साइड से अटैक कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा. सवाल है सर क्यों नहीं कर पाएगा? अब ब्रोमीन के यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरती हैं, इलेक्ट्रॉन से ब्रोमीन का ये पूरा जगह फुलफिल्ड है. OH के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा ना अगर OH माइनस इधर से अप्रोच करने की कोशिश करता है तो मतलब कि ये जो पूरा एरिया है इस साइड का, ये पूरा एरिया फिर OH माइनस के अप्रोच के लिए पॉसिबल रहा नहीं. OH माइनस के अप्रोच और इधर से पॉसिबल हो नहीं पाएगा. तो सवाल है कभी फिर OH माइनस अप्रोच करेगा किधर से? वेल, द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज OH minus will actually approach from behind. If we take a closer look in this case, during this approach, nobody is present here to actually restrict the approach of the incoming OH minus. Hydrogen is present there, but as we discussed earlier, the valence shell of hydrogen is what? 1s1, which is the least. So hydrogen practically doesn't count. Meaning hydroxyl ion has plenty of space to approach the carbon atom here, and it does so. तो जब बात आती है OH माइनस के अटैक की on the electron deficient carbon, then the attack always happens from the behind the carbon halogen bond.
Why? Because that is the more accessible way, and also that is the most energetically viable way. Means if the OH minus attacks the halogen bearing carbon from this position, then the required energy is the least amount. So for to meet with the energetic criteria and for this geometrical criteria also, OH minus always attacks the halogen bearing carbon from behind the carbon halogen. Now when it attacks, what happens? Now look, carbon is already having 4 bonds. Carbon cannot make 5 bonds. The maximum limit of bonds which carbon can make is 4, and that number 4 is satisfied here. So what happens? Well, in this case we get a transition state. Transition state in which carbon is actually bonded with 5 species. Out of those 5 species, 3 are the hydrogens which were already there, and 1 is the halogen atom, in this case the bromine, and the 5th one is the attacking hydroxyl. Now look here, although I have said that carbon is actually bonded with 5 species, but with Br and OH I haven't given a simple straight line. I haven't drawn a simple straight line. Instead, I have drawn a dotted line. Now what does this dotted line mean? ये dotted line mean क्या करता है? तो this dotted line actually means कि जब ये OH minus attack कर रहा है कार्बन को, तब simultaneously, remember the word, simultaneously, साइमल्टेनियसली का मतलब, साइमल्टेनियसली मीनिंग एक साथ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूट रहा है एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है, मीनिंग द क्लीवेज और द ब्रेकेज ऑफ CBr बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ CO बॉन्ड इज हैपनिंग एट द सेम इंस्टेंट. दैट इज व्हाई दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट. ओके, सो हियर इज one thing what we need to keep in mind. जब हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, तब हमें यह समझना होगा कि ट्रांजिशन स्टेट को हम एक्चुअली अलग नहीं कर सकते इन द सेंस कि हम इसका जो एग्जिस्टेंस है, ऐसे हालत में, ऐसे स्ट्रक्चर में हम स्पीशीज को कभी भी ट्रैप नहीं कर सकते. हमें ये कभी मिलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ 5 बॉन्ड हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी के क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये जो स्पीशीज है ये बहुत बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड रहेगा, इतना शॉर्ट लिव्ड रहेगा कि हम इसको अलग नहीं कर सकते. इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, कि ये ट्रांजिशन से गुजर रहा है. अब ट्रांजिशन हो कैसे रहा है? यहाँ पे देखो, कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या था? sp3. यहां पे हालांकि कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है, ये sp2 है. क्यों sp2 है? Well, here we have 3 firmly formed carbon hydrogen bonds, means 3 sigma bonds, but this 4th bond, which was actually with the bromine, this is now breaking, and simultaneously another bond is forming with in between कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो ये जो बॉन्ड ब्रेकेज और क्लीवेज जो हो रहा है ना, यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे एक प्योर p ऑर्बिटल काम कर रहा है. तो अगर प्योर p ऑर्बिटल यहाँ पे अगर काम कर रहा है, तो कार्बन के पास तो थे ही टोटल 3 p ऑर्बिटल्स. 3 p ऑर्बिटल्स इसने पहले यूज कर लिए थे हाइब्रिडेशन में, तो अभी प्योर p ऑर्बिटल ये पे लाएगा कहां से? ऑब्वियसली यहाँ से इसको एक फ्री करना होगा.
तो अगर एक p ऑर्बिटल ये sp3 हाइब्रिडेशन से फ्री करता है तो उसका हाइब्रिडेशन फिर घट जाएगा ना, sp2 हो जाएगा। तो sp2 हो जाने की वजह से हमें क्या मिले, 3 सिग्मा बॉन्ड मिले। और sp2 का जियोमेट्री क्या है, जियोमेट्री है प्लेनर, मतलब कि ये कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन ये सब क्या है, ये सब एक प्लेन में है। और वो प्लेन कौन सा है, वो प्लेन कुछ ऐसा रहेगा, ये बीच में कार्बन और इधर पे हाइड्रोजन, इधर ऊपर में रहेगा एक हाइड्रोजन ये दूसरा वाला, और यहीं से नीचे इस बोर्ड के पीछे रहेगा ये तीसरा हाइड्रोजन। लेकिन रहेंगे सब के सब एक ही सिंगल प्लेन में। और इस प्लेन में अगर मेरा ये हाथ वो अगर प्लेन है तो इस प्लेन के इधर है मेरा फॉर्मिंग सी और ऑक्सीजन का बॉन्ड, और इधर है मेरा नाउ इन ट्रांजिशन और इन ब्रेकिंग पीरियड सी एंड बी आर बॉन्ड। सो ये है पूरा कहानी इस ट्रांजिशन स्टेट का। अब जब ये सी बी आर बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा और सीओ बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा, तब क्या मिलेगा हमें, तब हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट विच इज मिथानॉल। तो ये है पूरा कहानी जब aqueous KOH या फिर फॉर दैट मैटर NaOH reacts with bromomethane or for that matter iodomethane or chloromethane to give methanol. Now look here students, यहाँ पे ना in this case I have mentioned a transition state. I haven't mentioned any intermediate. That means this whole process is actually a one-step process. In the part 1, you have a chapter named chemical kinetics. So if we do the chemical kinetics or the kinetic study of this specific reaction, we get a rate equation resembling this equation. Just give me a second. Sorry. So look here, we have the overall rate which equals to the rate constant multiplied by the concentration of the alkyl halide which is bromomethane in this case, and also the concentration of the base which is hydroxyl ion in this case. Now if we have to measure the order, how will we do that? We will calculate the power of these two terms which is 1 in this case, and we will add them. The order is equals to 1 plus 1, तो एक और एक मिलके बनते हैं 2। तो क्योंकि यहाँ पे है 2 ऑर्डर, इसलिए ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं या फिर ऐसे जो मैकेनिज्म्स होते हैं इनका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर या फिर SN2। यहाँ पे S stands for substitution, N stands for nucleophilic, 2 stands for bimolecular. Any doubt? If you have any doubt regarding this SN2 mechanism, you can ask me. No hesitation. हेजिटेशन करने से साइंस में हम सीखेंगे नहीं। साइंस में सीखने के लिए हमें सवाल पूछना जरूरी है। तो सवाल है तो पूछ लो। गुड, आई थिंक नहीं है। ओके, सो आवर नेक्स्ट सबस्ट्रेट। Our next candidate
is this molecule. तो इसमें भी हम क्या देंगे, एक्वस KOH देंगे। इसमें भी हमें क्या मिलेगा, इसमें भी हमें वही एक अल्कोहल मिलेगा। So now the question which arises is the mechanism also same? Because at first, in the first case, we had bromomethane. Now we don't have bromomethane. What we have? We have 2-methyl 2-bromopropane. So in this case, our substrate has changed. The product, however, is an alcohol. So the question is, does the mechanism also change in some way? The answer for that question is actually yes. The mechanism also changes. Now, why does it change? Let's first understand that. So if we follow the approach of SN2, I can draw this molecule like this. Now, as we saw earlier, the hydroxyl ion will approach from behind. Now, this is where the things get messy. प्रॉब्लम क्या है, पहले के केस में हमारा था हाइड्रोजन, उसका साइज बहुत छोटा था, 1 आसानी से फिट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मिथाइल। मीनिंग the approach, the space which was available to the hydroxyl ion earlier is now restricted. So let me ask you guys a question. Given the choice, suppose you need to travel from point A to point B by, let's say, bus. A to B you need to travel by bus. Now there are 2 buses. One which is very much crowded, one which is completely empty. Which one will you choose? Well, all of us will choose the empty one. No, none of us actually want to get on the crowded bus. Meaning, as there is a lot of crowd, so we tend to avoid that crowd. So the same thing is applicable to our hydroxyl ion here also. As there is a lot of crowd, means restriction of space is there, so hydroxyl ion generally tends to avoid this direct approach. Means the direct attack on the halogen bearing carbon. This restriction or this problem of space is actually known as steric hindrance. Hindrance means lack of space or lack of that. Steric means in this case space or position. So due to this reason, hydroxyl ion does not actually attack the halogen bearing carbon. Rather what happens is this CBr bond, it is also polarized. So this CBr bond actually starts to ionize. ये ionize होते होते बना देता है एक कार्बो कैटायन। अब मतलब कि क्या हुआ, ये जो CBr बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये धीरे धीरे टूट जाता है कंप्लीटली। एक स्टेप में ऑब्वियसली नहीं टूटता है, धीरे धीरे टूटता है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस ये बॉन्ड जो है ये टूट जरूर जाता है। अब क्या है, नाउ प्रीवियसली दिस कार्बन वाज हैविंग sp3 hybridization. Now as you can see, this positive charge carrying carbon is actually bonded with 3 other carbons. So that means here we have 3 sigma bonds. That means the hybridization of this carbon is actually sp2. sp2 meaning this carbon will have one p orbital and the geometry of this carbon will be planar. Means this carbocation intermediate, let me just write it, if you can see here, carbocation which is intermediate by the way,
So this is an intermediate, meaning we can actually track this one. So this intermediate now is having a planar structure. Planar structure means, let's say this is staying on the plane of this whiteboard. So if this is staying on the plane of this whiteboard, then that means the present OH minus can attack from both sides. If it can attack from both sides, then that means we will get OH attached with the positive charge carrying carbon in both the cases, and the potassium K plus present will go ahead with the bromide ion. Now one last thing, students, this is in this type of mechanism only the halide, alkyl halide is important, meaning in the rate equation we will see only the alkyl halide. And not the base. So hence this type of mechanism is actually known as SN1 or substitution nucleophilic unimolecular. There are some stereochemical aspects also, like inversion of configuration, which is related to SN2, and racemization, which is related to this SN1, but that we will talk in our next class. So if you guys have any questions regarding this SN1 and SN2 mechanism, you can ask me. Okay, so I guess there are no many questions. So then I will see you in the next class.